Good morning, students. Students, today I'm going to explain you some of the basic concepts of poetry, like rhyme scheme and the poetic devices or figure of speech that are used in poetry. So, first of all, let's discuss the rhyme scheme. A rhyme scheme is a pattern of rhyme that comes at the end of each verse or line in poetry or a poem. How to find rhyme scheme? To find the rhyme scheme of particular poem or stanza of the poem, we have to observe the last words of each line of the stanza. Like a stanza is given to you, okay? 1 and 2, buckle my shoe. 3 and 4, shut the door. So how we have to find the rhyme scheme? We have to observe the last word of the line. To shoe. Pronunciation sounds same, rhyming words, okay? So A. 4, door. Same rhyming words. B. So the rhyme scheme will be A, B. Okay. Next example. 2 roads diverged in a yellow wood. And sorry, I could not travel both. And be one traveler long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. Look, last word would, both, यानी कि A, B. Stood किससे rhyme? Would, stood, again A, could, again A. Okay, would, stood, could, both, growth. तो rhyme scheme will be, इसका rhyme scheme क्या होगा? A, B, A, B. Okay? Now, in this way, we have to find the rhyme scheme. Or, if a poem doesn't have a rhyme scheme, that poem is written in free verse or freestyle verse. Okay, if the poem doesn't have any rhyme scheme, तो वो किस में है? Free verse style में है. Rhyme scheme is used to communicate idea in more effective way in poetry. Okay. Let's discuss the poetic devices. There are many poetic devices that are used in poetry. So let's discuss what the poetic devices are. Poetic devices are a form of literary devices used in poetry. A poem is created out of poetic devices. Poetic devices are essential tool that a poet uses to create rhythm, enhance a poem's meaning, or intensify a mood or feeling. There are many poetic devices that are used in English literature. So main poetic devices today I am going to discuss with you. Okay, these are alliteration, repetition, simile, metaphor, personification, oxymoron, onomatopoeia, refrain. Okay, so let's discuss it one by one. Okay. First of all, alliteration. Okay, what do you mean by alliteration? Alliteration is a poetic device used when two or more words in a phrase or a line of poetry share the same beginning consonant sound. Okay, consonant, you know what the consonants are? English alphabet is divided into two parts, vowel and consonant. In vowel there are 5 words. Rest of the words except vowel A, E, I, O, U are the consonants words. Okay, so consonants words. Okay, beginning जो initial sound है consonant sound है, और अगर वो repeat हो रहा है in a line of a poem or a phrase, okay, then कौन सा poetic device है? Alliteration. For example, lay like a load on my weary eye. Okay, lay like a load.
टू और मोर वर्ड, टू टाइम्स, ओके, टू और मोर वर्ड्स का इनिशियल साउंड कंसोनेंट है और वो रिपीट हो रहा है, ओके, देन विच पोएटिक डिवाइस यूज देयर इज ले alliteration, like lay, low, like low, load, lo. Okay, so here which poetic device is used? Alliteration. Second example, wanted where. Okay, in road not taken, two words are there in a same line. Wanted where, were. So which poetic device? Alliteration. Second is repetition. वर्ड्स और फ्रेजेस रिपीटेड टू और मोर टाइम्स इन अ पोएम और स्टांजा. एक ही वर्ड या एक ही फ्रेज एक ही लाइन में या टू लाइन्स में एक ही स्टांजा की यूज हुआ है, रिपीट हुआ है, तो वहां कौन सी पोएटिक डिवाइस है? रेपिटेशन. जैसे वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट अ सिंगल ड्रॉप टू ड्रिंक. ओके, वाटर वाटर वन वर्ड टू टाइम्स, तो दिस इज रेपिटेशन. Simile used for the comparison purpose. Okay, this used for comparing two different things usually by using the word like or as. Comparison जो है as और like लगा के जब हम comparison करते हैं then simile poetic device use होती है. Comparison of the two different things. Okay, फॉर एग्जाम्पल माई ल्यूव इज लाइक अ रेड रोज. ओके, अपनी जो गर्लफ्रेंड है या अपने जो लव है उसको किससे कंपेयर कर रहा है? अ रेड रोज. ओके, तो लाइक अ रेड रोज, लाइक लगा है, दैट्स वाई कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ? सिमिली. इट इज एज कोल्ड एज आइस. ओके, एज कोल्ड एज आइस. एज कोल्ड कैसा कोल्ड है? आइस की जैसा. ओके, तो यहाँ कौन सा पोएटिक डिवाइस है? सिमिली. क्यों सिमिली? बिकॉज एज एंड लाइक, एज यूज हुआ, यहाँ लाइक यूज हुआ है और यहाँ एज यूज हुआ है और कंपैरिजन हो रहा है, दैट्स वाई सिमिली पोएटिक डिवाइस हैज यूज्ड. Next is metaphor. This poetic device is also used for comparison purposes. Okay, but इनका जो comparison है hidden comparison होता है, इसमें as और like नहीं लगाया जाता. Used to make hidden comparison between the two different things that are unrelated. Okay, like world is a stage. In Shakespeare poem world is a stage में he used a line, he has written a line that world is a stage. Okay, world को किसके साथ कंपेयर कर रहा है? स्टेज के साथ, लेकिन उसने like और as नहीं लगाया. That's why which poetic device has used here is metaphor. Two roads diverged in a wood. Two roads are the symbol of the life, symbol of the choices that one is going to be made in life. Okay, so here two roads, जो roads हैं, that is metaphor. Okay, next is personification, where non-living things are described as living things. When living beings qualities are given to non-living things. Okay, जब poetry में किसी non-living thing को living thing की qualities दी जाती हैं, then कौन सा poetic device use होता है? personification. Like in The Song of Rain, I am the song of earth. वहां सिर्फ I यूज हुआ है. I किसके लिए यूज हुआ है? रेन के लिए. ओके, रेन जो है अपने आप को I बोल रही है, जो कि हम पर्सन्स के लिए यूज करते हैं. दैट्स वाई कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज होगा है? personification. I am not cruel but truthful. अगेन एक पोएम है मिरर. मिरर में I, मिरर जो है वो बोल रहा है आई एम नॉट क्रूअल बट ट्रूथफुल. ये जो क्रूअल एंड ट्रूथफुल की क्वालिटीज हैं ये पर्सन की होती हैं. ये मिरर अपने लिए यूज कर रहा है. दैट्स वाई यहाँ कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है? personification. ओके, देन नेक्स्ट इज ऑक्सीमोरोन, यूज्ड वेयर टू ऑपोजिट्स आइडिया आर जॉइंड टू क्रिएट इफेक्ट. ओके, टू ऑपोजिट आइडियाज को ज्वाइन किया जाता है इफेक्ट क्रिएट करने के लिए. लाइक शी सिंग्स डे एंड नाइट. ओके, डे एंड नाइट दोनों ऑपोजिट आ गए. ठीक है, डे नाइट, तो यहाँ क्या है? ऑक्सीमोरोन. क्रूअल काइंडनेस, क्रूअल भी काइंड, एक साथ जब टू वर्ड्स जो है मतलब एक टू ऑपोजिट जो है इफेक्ट यूज हो रहे हैं, टू ऑपोजिट आइडियाज यूज हो रहे हैं, तो वहां कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज होगा? ऑक्सीमोरोन. लिविंग डेथ. ओके, तो यहाँ भी क्या है? ऑक्सीमोरोन पोएटिक डिवाइस.
Next is onomatopoeia, used to evoke the actual sound of the things, animals, birds in the poetry. अगर poetry में किसी things का actual sound जो है रिवील हुआ है, इवोक हुआ है, वहाँ कौन सा पोइटिक डिवाइस यूज होगा? ओनोमोटोपिया. लाइक द रस्टलिंग लीव्स, लीव्स का साउंड क्या होता है? रस्टलिंग. ओके, तो रस्टलिंग लीव्स, अगर रस्टलिंग लीव है तो यहाँ कौन सा पोइटिक डिवाइस यूज हुआ? ओनोमोटोपिया. मरमरिंग ऑफ बीज, अगेन मरमरिंग, बीज क्या करती है? मरमर. ओके, तो हेयर ओनोमोटोपिया. रिफ्रेन, a line or a group of lines that regularly repeat, usually at the end of stanza in the poem. Okay, एक ही लाइन जब स्टांजा में या पोएम में 2 टाइम या 3 टाइम रिपीट हुई है, देन विच पोएटिक डिवाइस यूज? देयर इज refrain. Like old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O, and on his farm he has some rats, E-I-E-I-O. तो E-I-E-I-O जो है ये लाइन हर टाइम रिपीट होगी इन द पोएम. ओके, तो ये क्या होगा? refrain. कौन सा पोएटिक डिवाइस है? refrain. एनाफोरा. Next is anaphora. When a word is repeated at the start of 2 or more consecutive lines in a stanza or a poem. जब एक ही word से 2 और 3 lines start हो रही हैं, then कौन सा poetic device use होगा वहाँ? anaphora. Like, for example, wind comes softly, don't break the shutters, don't scatter the papers, don't throw down the books. Here, with one word, 3 lines have started. Okay, so here don't. Okay, so here which poetic device has used? Anaphora. Okay, so students, these are some of the poetic devices, okay, that we can say important one. Okay, so I hope this will be cleared to you. Okay, have a nice day, students.